1, 2, 3, start. Hi guys, welcome to my living room. Okay, so this is the entrance of my house exactly in front of me, and जब आप रूम पे एंट्री करते हो so first thing you are gonna see is right side पे एक रूम है which is my parents room, and by the way अगर आपने मेरा बेडरूम टूर नहीं देखा है so you can go and check that. So बेडरूम का हम लोगों का कलर स्कीम था white and neutral, and इस रूम का कलर स्कीम है exactly wooden finish. So you are gonna see everything wooden finish के ऊपर, from sofa to dining table to like even darwaza and curtain, everything wooden finish के ऊपर है, and moreover like a bright maroon tone. So first thing when you are gonna enter to this room, the first thing you are gonna see is this dining table, and let me just show you this. So this dining table is purely wooden finish, and you can see that it's a wooden thing. So हम लोगों ने कोई इसे पेंटिंग नहीं किया है, this is purely wooden, that's why it cost us very much. And yeah, this is our dining table. By the way, ये जो प्लास्टिक का जो है which is from Amazon, मैंने जो Amazon haul किया था वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था. So I'm gonna show you the floor also. So if you haven't seen my empty house tour, वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से फ्लोर को दिखाया था. Anyway, so this is our dining table, and इसके ऊपर का जो मटेरियल है which is purely glass material, and all other things is like purely wooden. And next when you are going to see this dining table, ठीक उसके पीछे ही है our kitchen, and which is the color scheme of this kitchen is as you can see red and white. So generally सब लोग बोलते हैं कि white क्यों है, so माँ ने white इसलिए चूज किया है because ताकि वो अच्छी तरह से clean हो सके. And this is a modular kitchen as you can see. यहाँ पर we have like a showcase kind of a thing. So basically this and this are from our old house actually. बाकी इस रूम पे जो भी है everything is like हम लोगों ने न्यू खरीदा है to match the color scheme, and इसीलिए हमने इसको लाया है just because of two reason. First of all ये wooden का है so it matches our color scheme. Second of all we need something कि ताकि इसके ऊपर माइक्रोवेव हम रख सके, and also इसके नीचे all the extra groceries का जो सामान होता है वो रहता है. So it's basically इसके अंदर miscellaneous stuff है. अभी तो फिलहाल बहुत सारा सैनिटाइजर भी है. Okay, so exactly beside of this showcase we have our fridge, जो कि ये भी old ही है because honestly first of all I couldn't find anything like maroon or any wooden finish tone fridge first of all. Second of all, there is no point of buying new fridge because it's absolutely fine. And now I'm gonna show you that exactly beside this kitchen we have our washroom which is our main washroom, and इसके ठीक बाजू में है our washing machine. So इसके color you can see that it's like a dark maroon color or dark jam color you can say. So it's not like a purely wooden finish, but yeah it matches the vibe also. And you can see that पीछे का जो tiles है which is very beautiful. And beside, and ये washing machine यहाँ पर इसलिए है because it's attached to the toilet, so it's very helpful. And beside this we have our basin, and which is very beautiful, I must say that. And generally जो भी घर पे आता है first thing they ask that कहाँ से ये लिया है आपने, because it's full set. Also इसका जो tone है you can see that इसके साइड में golden border है, and it's perfect for this room because this is the only thing which is neutral to this room, and इतना ज़्यादा bright है तो कुछ tone down करने के लिए it's perfect. And it has lots of compartment also, नीचे भी ऊपर, तो you can see that my face washes are like overloading यहाँ पर brush and all that thing. And yeah, this is our basin. By the way, आप जैसे देख रहे हो वैसा ही almost 90% टाइम ही रहता है. It's very clean and ऐसा ही रहता है. And next, this is our bedroom का दरवाजा. इसके अंदर क्या है वो last video आप जाके देख लो. And yeah, next we have this which is the charge phone, but I'm gonna show you this. This is basically a phone holding thing, and मैंने इसे Club Factory से लिया है which unfortunately is no more in India. And इसके ठीक बाजू में है यहाँ पर. So यहाँ पर we have our TV, and trust me ये ऐसा नहीं रहता है, trust me, because यहाँ पर एक plug point था जो कि मैंने तोड़ दिया है. So generally जुगाड़ के लिए ये ऐसा है. We have to fix that as it's a corona time, इसीलिए बाहर से कोई आ नहीं पा रहा है. But yeah, it's like अभी तक के लिए ऐसा ही है. So यहाँ पर हम लोगों का TV है. And now I'm gonna show you the most favorite part of my house, and trust me
I was dreaming about this point for like 2 to 3 years back, and this is a very beautiful spot for me. So now I'm gonna show you that. Okay, so यहाँ पर जो टीवी था एंड उसके ठीक राइट साइड पे यहाँ पर एक सोफा सेट है, वहाँ पर भी है. दिस इज एक्चुअली, ये जो सोफा सेट है फुल एक साथ है, एंड यू कैन सी दैट इज द कलर स्कीम इज एब्सोल्युटली मैचेस द वाइब, एंड दिस डिजाइन इज सो फ्रीकिंग यूनिक. एंड लाइक हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है जस्ट टू फाइंड समथिंग यूनिक डिजाइन, बिकॉज ये जो स्पेस है इसमें कुछ एल पैटर्न जैसा चाहिए था, एंड वी डिडंट वांट दैट कि वो एक साथ जुड़ा रहे. अदरवाइज जो लाइक साइड वॉल्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारा धूल रह जाता है. सो वी नीड समथिंग दैट, एक्चुअली वी वांटेड समथिंग दैट इट मैचेस द वाइब ऑल्सो. सो फर्स्ट यहाँ पर एक साइड टेबल है जो कि एब्सोल्युटली अटैच टू इट, लाइक यू कैन मूव दैट, बट ये सोफा सेट के साथ ही था. यहाँ पर कुछ डेकोर सामान है, एंड ये हमेशा ऐसे ही रहता है. लाइक हम लोगों के सारे, स्पेशली मी, माई एंड माई सिस्टर वर्क्स for our house almost every single day to clean it, because it's a big house so it's very hard to maintain. So yeah, यहाँ पर सोफा सेट है, and this cushions also is actually attached to this sofa. हम लोगों ने ये बाहर से नहीं लिया है. Even this cushion का जो वॉल है वो भी हम लोगों को दिया गया था. And पीछे you can see that it's a big window, and I think इसका height 6 feet के around है, which is very big and very bright. एंड ये जो कर्टेन्स है एज यूजुअल मैंने इसे अमेजोन से लिया है, एंड दिस कर्टेन्स आर फ्रॉम कर्टेन मार्केट एंड फ्रॉम कोलकाता, एंड दिस इज माय पिंकी. एनीवे, सो इसके जो सामने यू कैन सी दैट. ओके, सो ये सोफा के ठीक सामने है आवर सेंटर टेबल, एंड इसका कलर ब्लैक है, एंड आई पर्पसली चूज दिस ब्लैक कलर जस्ट बिकॉज ऑफ ये इसका इस साइड का जो है वो बहुत ज्यादा लाइट है, लाइक लाइट ऑकर येलो के ऊपर है, सो इसीलिए ब्लैक बहुत हाईलाइट करेगा. एंड यार यहाँ पर सब कुछ डेकोर सामान है, एंड वी हैव आवर क्रिस्टल टॉर्टॉइज विच इज रियली लव्ड बाय अस. एंड ये मैंने अमेजोन से लिया था, एंड इसके नीचे है ऑल ऑफ माई पीआर बॉक्सेस विच इज लाइक डेकोर सामान हो गया है फिलहाल अभी. सो ये पीआर बॉक्सेस एम्प्टी है, तो बॉक्सेस बहुत अच्छा है इसलिए मैंने इसको रख दिया है. इसके नीचे यू कैन सी राउंड शेप रग, एंड विच इज वेरी कलरफुल, एंड आई ऑल्सो गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन. दिस टू आर फ्रॉम अमेजोन, एंड दिस इज रियली गुड क्वालिटी रग. ओके, सो दिस साइड इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ आवर टीवी, एंड ये भी अटैच्ड है, एंड इसके साथ एक छोटू सा सोफा भी अटैच्ड है. एंड लेट मी जस्ट शो यू दिस. उसका नाम पिंकी है एंड इसका नाम लालटी है. सो या ये लोग भी हम लोगों के साथ यहाँ पर ही रहता है. एंड यार यहाँ पर एक क्या बोलते हैं इसको, रिंग होल्डर है, की बेसिकली की होल्डर नॉट रिंग होल्डर, जो कि मैंने लिया था आई थिंक शीन और क्लब फैक्ट्री. आई थिंक क्लब फैक्ट्री, शीन पे ये सब नहीं मिलता था, जो कि फिलहाल अभी as I have told you that club factory is lost in our India. So anyways, yeah, this is our living room and that is our dining room. So yeah, and this place is very close to my heart, because as I told you that I was like dreaming exactly this for years, and finally जब ये successful हुआ है तो definitely ये बहुत ही एक खुशी की बात है. So yeah, that's pretty much it guys. I hope you have liked it and like you have enjoyed. This is not something a learning thing. So yeah, I hope you have enjoyed and I give you little bit of smile on your face. So yeah, that's pretty much it. See you guys on my next video. Till then, bye. Stay happy, stay positive and bye bye. তাড়াতাড়ি করো, হাত পা কাঁপতে থাকবে আবার। কেউ আসছে? দিদা মনে হচ্ছে। ওখানটায় যা। ঠিক আছে? তোকে দেখা যাচ্ছে না তো? না না, আমাকে